Good morning, everyone. We are there with the subject BK, chapter number 5, reconstitution of partnership, in that death of a partner. So, in the last lecture, we have completed with the chapter number 3, that is reconstitution of partnership, in that we saw admission of a partner. Okay, so this is the third form of reconstitution, that is death of a partner. Okay, so I hope everyone is having a textbook in front of them and they are ready with the notebook also. Now, what is meant by death of a partner? When we talk about death of a partner, now a partner will cease to be a partner. ठीक है, एक partner अपने partner के position से कब निकलता है? On his death. Okay, that's why and death is considered as a compulsory retirement. Okay, so यहाँ पे compulsory retirement का है. एक होता है retirement where the partner वो खुद से कंपनी छोड़ के जाता है. ठीक है, उसका जो willingly वो कंपनी छोड़ के जाता है, that is retirement of a partner. And in one case where the partner मर जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, in that case that retirement is a compulsory retirement. Okay, so partner will cease to be partner on his death. एक partner की position से कब हट जाता है? On his death. That's why the death is considered as a compulsory retirement of a partner. Now whenever a partner dies, okay, now if in the partnership deed any provision is made that if one partner dies, the other partner will going to continue the partnership firm, then in that case the partnership firm gets continued. Okay, so the partnership business may be continued by surviving partners if partnership firm makes provisions in partnership deed. Okay, so if any such provisions is there in the partnership deed at the time of making this partnership deed, okay, that if any of the partner dies, the other partners will can continue. Okay, so in such case the partnership business continues. Next, partners make arrangements to settle account of deceased partner. Okay, so जो भी partner मर जाता है, जिस भी partner की death हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे in this chapter? Deceased partner. Okay, so what is deceased partner? So if the partner dies, then a settlement, उसका जो भी account है उसको settle करना पड़ता है, ठीक है, और किसके साथ settle करना पड़ता है? With his legal representative. Okay, so whomsoever, जो भी इसका legal representative रहेगा, उसके साथ ये disease partner का account we have to settle, and that only you will going to learn in this chapter. Now, at that time, the interest at 6% per annum on amount due from the date of death to the date of payment. Okay, so the interest will be given to the deceased partner. Okay, and it will be as per 6% per annum. Okay, और वो कहाँ से होगा? Till the date of its death. ठीक है, उसके डेथ तक की जो भी कैलकुलेशन होगा वो किया जाएगा, क्योंकि एक बार मर गया उसके बाद में उसको कोई शेयर नहीं होता है. ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट हो या कुछ भी हो, राइट. सो अप टिल इट्स डेथ जो भी कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट विल बी गिवन टू दी पार्टनर एज पर 6%. तो ये 6% आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है फॉर 1 मार्क. ओके, सो एज पर 6% द इंटरेस्ट विल बी पेड टू दी डिजीज पार्टनर. Is it clear? Death of a partner meaning? So death of a partner is a compulsory retirement. Okay, and other partners, they can continue the business if any provision is mentioned in the partnership deed. Once any partners dies, then there should be arrangement to settle the account of the deceased partner with the legal representative, and interest is paid at the 6% per annum on the amount which is due. Now, in the admission, we have saw the different ratios that we have to calculate it. Okay, so here, first is new profit sharing ratio. So on death of a partner, the profit sharing ratio of remaining partners changes. अगर suppose 3 partners हैं, उसमें से एक मर गया, अब कितने बचे? 2 partners. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो profit sharing ratio वो भी क्या हो जाएगा? Change हो जाएगा, which means there is a need to calculate the new profit sharing ratio. So the profit sharing ratio of remaining partners increases because profit sharing of deceased partner gets divided and received by the remaining partner. तो अब जो profit sharing ratio वो बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले 3 पार्टनर्स में डिवाइड होता था, अब 2 पार्टनर्स बचे हैं, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा? अपने आप बढ़ जाएगा. ठीक है, एंड इट विल बी डिवाइडेड एंड रिसीव्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स. ओके, everyone knows how to calculate this new profit sharing ratio that you will going to learn when we will going to do the problem.
The next is benefit or gain ratio. Now in this we are going to calculate gain ratio or benefit ratio कहा जाता है जिसको, ठीक है. हमने admission में देखा, in admission we have calculated sacrifice ratio. Why? Because in admission what the two partners they are doing, they are sacrificing their share for the new partner. वो new partner के लिए अपना share क्या कर रहा था, sacrifice कर रहा था. Whereas in this chapter death हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मर गया है उसका share भी किसको मिल जाएगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनको, ठीक है. तो दैट्स व्हाई द गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड इन दिस चैप्टर. Now benefit or gain ratio is a ratio by which surviving partners are benefited due to the death of the partner. क्योंकि डेथ हो गई है तो अब जो प्रॉफिट आ रही है, जो भी अमाउंट है वो अभी किसको मिलेगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है उनको मिलेगा, राइट. तो उनके लिए this is a gain ratio. The extra share which they are getting is added in their old share. So whatever any extra share because of the death of a partner they will going to get, it will be added to their old ratio. So such extra share which they are getting, so ये जो extra share उनको मिल रहा है इसको हम कहते हैं gain ratio. ठीक है, इसको कहते हैं gain and the ratio is called as gain ratio. ठीक है, तो जो भी extra share मिलता है it is called as gain and जो ratio होता है that ratio is called as gain ratio. Now this ratio is basically used to calculate, ठीक है, to write off the goodwill which is created or to raise to the extent of retiring partner share only. ठीक है, तो ये दो चीज के लिए basically ये gain ratio use होता है, to write off the goodwill which is created or to raise to the extent of the retiring partner's share only. Now what is the formula of this gain ratio? Its gain ratio equals to न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. फॉर्मूला सब लिख के रखेंगे, ठीक है. क्या फॉर्मूला है गेन रेशियो का? गेन रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस old ratio. Okay, so when we were going to do the problem at that time we were going to see how to calculate this gain ratio if it's there in the problem. Okay, so gain ratio equals to new ratio minus old ratio. Now the next is revaluation of assets and liabilities. So as we have saw in the admission कि जो assets और liabilities है वो revalued होते हैं, ठीक है. If there is an increase in asset तो इसका एक इफेक्ट हम एसेट में ऐड करते हैं और दूसरा इफेक्ट वी शो इट ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. Similarly, if there is a decrease in asset, we will deduct the amount from the asset and we will show in the debit side. Now, the assets and liabilities of the partnership firm are revalued on the death of a partner. कभी भी कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उसका रिवैल्यूड अमाउंट निकालते हैं, ठीक है. द बेनिफिट अराइजिंग ऑफ इट आर गिवन टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर. सो एनी प्रॉफिट विल बी देयर, ओके, एनी बेनिफिट इज देयर by revaluation of this asset, it will be given to the representative. जो भी डिजीज पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको दिया जाएगा. Effects of revaluation of assets and liabilities are shown in revaluation account. जैसे हम एडमिशन में करते थे, in the same manner in this also all any assets or liabilities that will be shown in the revaluation account. The profit or loss on revaluation, okay, जो भी profit और loss होगा revaluation का, is transferred to deceased partner's capital account to the extent of his share. और जो भी profit और loss होगा उसके share के accordingly it will be transferred to the deceased partner's capital account. Is it clear? Okay, so I hope these 3 points are clear: new profit sharing ratio, benefit ratio, and the revaluation of assets and liabilities. Now,
whenever there is a death of a partner, जब कोई पार्टनर मर जाता है, ठीक है, so there are certain amount, that जो डिजीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को, उसके नॉमिनी, अगर उसका कोई नॉमिनी है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, इट कैन बी एनी, ठीक है, तो जो भी एग्जीक्यूटर, बेसिकली हम एग्जीक्यूटर वर्ड ही यूज करते हैं, ठीक है, तो वॉट एवर अमाउंट विल बी देयर, ठीक है, जो भी ड्यू है, ठीक है, ऑफ द डिजीज पार्टनर, इट विल बी गिवन टू द एग्जीक्यूटर और टू द नॉमिनी और टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द डिजीज पार्टनर, ठीक है। अब कौन सा अमाउंट है विच विल बी रिकॉर्डेड इन द डिजीज पार्टनर, ठीक है, जो ड्यू है, ठीक है। फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहला क्या है, इट्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओके, इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। So the capital of the deceased partner is calculated on the basis of balance of capital of deceased partner shown in the last balance sheet, ठीक है, तो जो भी लास्ट बैलेंस शीट है उसमें जो भी डिसीज पार्टनर का कैपिटल होगा, that will be shown as a opening balance of capital in the partner's capital account. Okay, so the first is opening balance of capital, that is amount of capital. Second is share of general reserve, so जो भी general reserve का share है, ठीक है, it will be given this partner, ठीक है, तो entry क्या होगी, I want everyone to write these entries also, ठीक है, so share of general reserve to the deceased partner, it will be general reserve account debit to deceased partner's capital account. It is general reserve account debit to deceased partner's capital account. I hope these two entries you have written, these 2 points you have written, opening balance of capital, and second is share of general reserve. Okay. Now the third is share of profit and loss account. Okay. So if the profit and loss account is given in the liability side of the balance sheet, okay. So what will be your entry? It will be profit and loss account debit to deceased partner's capital account. Entry क्या होगी? Profit and loss account debit to deceased partner's capital account. Okay. And if there is a share of profit and loss account, so if any profit and loss account is given on the asset side of the balance sheet, the entry क्या होगी? It will be deceased partner's capital account debit to profit and loss account. Okay, so profit and loss account liability side, then profit and loss account debit to deceased partner's capital account. अगर profit and loss account asset side में दिया है, तो it will be deceased partner's capital account debit to profit and loss account. ठीक है, तो जैसे हमने एडमिशन में सीखा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस, वही पॉइंट है ये, ठीक है। लायबिलिटी साइड में है तो आप कहाँ पे डालोगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, डिजीज पार्टनर के अकाउंट में, और अगर एसेट साइड में है तो डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। इज ऑल दिस 4 points you have written? Once you will done, I just put Y and then I will continue. Now the next is ड्राइंग्स। ओके, सो देयर इज अ ड्राइंग्स, तो अगर कोई ड्राइंग है तो उसका अमाउंट भी ड्यू है, देना पड़ता है, ठीक है। तो इफ देयर इज अ ड्राइंग, तो व्हाट विल बी द एंट्री? इट विल बी डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। क्या एंट्री होगी? डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू drawings account. So you will going to record this drawing on the debit side of the deceased partner's capital account. Okay. Next, interest on drawing. So if interest on drawing is there, then the entry will be deceased partner's capital account debit to interest on drawing account. Again, the drawing interest on drawing account will be recorded on the debit side of the deceased partner's capital account. Okay. Now here in the bracket it is mentioned calculate to the death of partner. Okay. So this will be calculated till the death of a पार्टनर, ठीक है। तो एक बार पार्टनर मर गया उसके बाद में कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जब जहां तक पार्टनर मर जाता है फिर वहां तक ही इसका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो अगर पार्टनर 1 महीने बाद मिडल में मरा या
अकाउंटिंग ईयर के 3 महीने बाद मरा, ठीक है, तो एज पर दैट द कैलकुलेशन विल बी डन, ठीक है, ओनली फॉर दैट मच मंथ. Next, interest on capital. Okay, so again, the interest on capital, you will going to calculate it till the death of a partner. ठीक है, जो भी पार्टनर का डेथ है और वहां तक ही आपको कैलकुलेट करना है ये अमाउंट. सो यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स. What will be the entry in case of interest on capital? अगर interest on capital है तो एंट्री क्या होगी आपकी? Interest on capital account debit to this is partners capital account. Okay, so जो interest on capital है कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? This is partners capital account के क्रेडिट साइड में. कहाँ पे होगा? This is partners capital account के क्रेडिट साइड में you will going to record this interest on capital. Okay. Now the next is सैलरी ड्यू टू डिजीज पार्टनर. ओके, अगर कोई सैलरी है जो पार्टनर को डिजीज पार्टनर को मिल रही थी, ठीक है, तो वो सैलरी भी उसको दी जाएगी और उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको, ठीक है, तो इट विल बी कैलकुलेटेड एज पर दैट मंथ्स. ओके, सो इट विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो जो भी सैलरी दे रहे थे डिजीज पार्टनर को वो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव को देगी, तो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये सैलरी है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डिजीज पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में. ठीक है, तो जो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप उसके क्रेडिट साइड में यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड बाय सैलरी अकाउंट. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन पे तो उसका एक पार्ट भी डिजीज पार्टनर को दिया जाता है. ठीक है, वेदर इट्स प्रॉफिट और वेदर इट्स लॉस. So if there is a profit on revaluation, what will be our entry? It will be revaluation account debit to disease partners capital account. Entry क्या होगी? Revaluation account debit to disease partners capital account. Okay. And if there is a loss on revaluation, so what will be your entry? It will be disease partners capital account debit to revaluation account. ठीक है, तो जैसे हम एडमिशन में करते थे इन द सेम मैनर यहाँ पे भी करना है. ठीक है, आप जब से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते थे इन एडमिशन हम क्या करते थे? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड करते थे. बट इन दिस यू विल गोइंग टू डिवाइड इट अमंग ऑल द पार्टनर्स. जो भी पार्टनर्स है उन सबके इसमें ये प्रॉफिट और लॉस आप डिवाइड करोगे और इसको आप रिकॉर्ड करोगे इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, इज इट क्लियर दिस मच? Now the next point is goodwill. Again, goodwill is very important. Okay, so if you will see that in the case of goodwill, two cases are there. Case one, if goodwill does not appear in the balance sheet. Okay, so if goodwill is not appeared in the balance sheet and you have to raise the goodwill, okay, so what will be your entry? It will be goodwill account debit to disease partners capital account. ठीक है, क्या एंट्री होगी? Goodwill account debit to disease partners capital account. Okay, और if that goodwill which is raised, if it's written off, ठीक है, अगर उसको write off किया है तो what will be your entry? It will be continuing partners capital account debit to goodwill account. Entry क्या होगी? Continuing partners capital account debit to goodwill account. और ये कौन से रेशियो में कैलकुलेट किया जाएगा? As per the gain ratio. ठीक है, सो पहला केस क्या देखा हमने? गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट. गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है और उसको आपने रेज किया है तो एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और उस गुडविल को अगर राइट ऑफ किया है तो एंट्री क्या होगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओके, नाउ केस 2, इफ गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट नाउ रीवैल्यू. ठीक है, जो भी गुडविल है वो बैलेंस शीट में है और उसको रीवैल्यू किया है तो दो केस हो सकते हैं. इधर देयर विल बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल और देयर विल बी अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल. ठीक है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है गुडविल में तो व्हाट विल बी योर एंट्री? इट विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे हम बाकी एसेट्स का करते हैं ना, कि एसेट बढ़ जाता है तो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डालते हैं, एसेट कम हो जाता है तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालते हैं। इन द सेम मैनर यू विल गोइंग टू ट्रीट द गुडविल आल्सो, क्योंकि इट इज आल्सो एन इंटेंजिबल एसेट। इफ देयर इज एनी रिवैल्यूएशन अमाउंट गिवन ऑफ गुडविल इन द, ठीक है, इन दैट केस इधर देयर विल बी इंक्रीज और देयर विल बी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर इंक्रीज है तो यू विल गोइंग टू राइट गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, and if there is a decrease in the value, then you will going to mention revaluation account debit to goodwill account. Okay, so these are the two cases which is there. So goodwill is very important in this chapter also. Okay, and there is a calculation of goodwill. Is it clear? Everyone has done, everyone has written this entries. Okay, now the next is share of profit in current year profit and share of loss in current year profit. Okay, so current year का जो भी profit होता है, ठीक है, ओके, सो जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है करंट ईयर में, करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से अगर प्रॉफिट है, ठीक है, तो वो भी बिजनेस पार्टनर को दिया जाएगा, और अगर लॉस है तो वो भी बिजनेस पार्टनर को दिया जाएगा। सो देयर इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है, तो इट विल व्हाट विल बी एंट्री, इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक नया अकाउंट आप रिकॉर्ड करोगे, इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसको कहते हैं, ठीक है। So profit and loss suspense account debit to disease partners capital account. Okay, so this will be entry if there is a share of profit in current year's profit, and if there is a share of loss, ठीक है, अगर loss का share कर रहे हैं in current year profit, then what will be your entry? It will be disease partners capital account debit to profit and loss account. ठीक है, तो current year का अगर profit है और उसमें लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब करंट ईयर में अगर कोई लॉस हो रहा है, तो व्हाट विल बी योर एंट्री? इट विल बी डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट वाला जो गुडविल था, और ये सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या आपको लॉस कैलकुलेट करना है, और उसको आपको रिकॉर्ड करना है इन द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, we will going to learn when we will going to solve the problem. Is it clear? Okay. Now the next is the settlement of amount due. Okay. So whatever the amount which is due, ओके आपको वो सेटल करना है, ठीक है। और जब आप सेटल करोगे डिजीज पार्टनर का अकाउंट, तो जो भी अमाउंट रहेगा डिजीज पार्टनर का, वो आप ट्रांसफर करोगे टू इस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट और नॉमिनी लोन अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर लोन अकाउंट। तो एज आई सेड कि यहाँ पे हम एग्जीक्यूटर को ही लेते हैं, ठीक है। तो आप जो भी अमाउंट ड्यू है डिजीज पार्टनर का, वो जब आप सेटल करोगे तो किसमें डालोगे? यू विल गोइंग टू ट्रांसफर इट टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एक ही वर्ड रखो, नॉमिनी एडमिन ऐसे चेंज मत करो। इट विल बी गुड इफ विल गोइंग टू मेंशन एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ठीक है। तो जैसे आप डिजीज पार्टनर का हम क्लोज करते हैं ना, क्रेडिट माइनस डेबिट करके, जो भी अमाउंट बचता है तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस कैरी डाउन में, ठीक है। हम उसको क्या दिखाते हैं? बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। But here you will going to not showing to going to show it as a closing balance. You will going to settle it to, and you will going to transfer it to the executor's loan account. Is it clear? Okay. So these were the important points, important entries that आपको जो याद रखनी है। Now if you will see over here, ये जो entries है, जो भी amount due है, ये disease partner का है, ठीक है। So in this chapter, the question might be asked only to prepare the disease partners capital account, ठीक है। जब हम partners capital account बनाते हैं तो हम सभी partners का बनाते हैं, ठीक है। तो सभी partners का अगर पूछा जाएगा तो आप सभी partners का account बनाओगे, और अगर सभी partner का account नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ disease partner का account पूछा जाएगा, तो आप सिर्फ डिजीज पार्टनर का अकाउंट ही बनाओगे। दैट्स व्हाई द एंट्री इज आल्सो लाइक दैट ओनली, ठीक है। अगर सभी पार्टनर्स का है तो आपको एंट्रीज पता है, आपको जो भी अमाउंट है वो सभी पार्टनर्स में डिवाइड करना है, और अगर सिर्फ डिजीज पार्टनर को बोला है तो आप सिर्फ डिजीज पार्टनर का अमाउंट ही कैलकुलेट करो।
Okay, then we can proceed further then. So we will going to start with the problem then. Okay, so the problem that we're going to start today, we're going to see today is problem number 1, which is there on your page number 202 of your textbook. So on page number 202, there is a problem which is given. I hope everyone is having textbook in front of them. So page number 202, this problem is there. Unsolved problem is there that we will going to solve today. Okay, so if you will see, 3 partners are there, Rajesh, Rakesh, and Mahesh. They're equal partners, so their ratio is equal, that is 1 is to 1 is to 1. On 31st March 2019, their balance sheet was as follows on 31st March 2019. Okay, so 3 partner है, राजेश, राकेश and महेश, and they are equal partners. ठीक है, उनका balance sheet दिया गया है. Here on the balance sheet, liabilities and asset side both is given. Okay, so एज बी डज इन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हम जैसे रिकॉर्ड करते थे सारे एसेट्स को न्यू बैलेंस शीट के एसेट में रिकॉर्ड करते थे, और उसी तरह सारे लाइबिलिटीज को हम रिकॉर्ड करते थे इन द बैलेंस शीट दैट वी आर प्रिपेयरिंग. ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है. ठीक है, so if you will see, land and building, furniture, data, stock and cash, so these are the assets which are there, and you will going to record it on the asset side of the balance sheet. So land and building is 4 lakh. Okay, now see, if you will see any adjustment is there on the land and building, yes, it's there. It is said land and building was to be depreciated by 10%. ठीक है, तो आप क्या करोगे, land and building को you will going to record it in the first column of the balance sheet. ठीक है, तो जैसे हम एडमिशन में करते थे वैसे ही आपको ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट करना है. There is no changes. ठीक है, तो क्योंकि land and building पे एडजस्टमेंट दिया था, that's why you will going to record it in the first column of the balance sheet. Okay, now the next asset which is there, it's furniture. So furniture is given 3 lakh. Again on furniture, it's there. Adjustment is there. So you will going to record it in the first column of the balance sheet. So it will be again, you will see furniture 3 lakh in the first column of the balance sheet. Okay. Now the next point is, next asset is data. So data is given 3 lakh over here in the balance sheet. Or adjustment दिया है. Yes, it is clearly mentioned. आपको RDD provide करना है 5% on data. Okay, so you will going to mention this amount of data in the first column of the balance sheet. Okay, so balance sheet, if you will see, we had mentioned it in the first column of the amount 3 lakh. Okay, now the next asset which is there, it is cash. Cash is given 1 lakh. So again, we will going to record this cash in the asset side. Okay, so asset side, if you will see, they had mentioned cash over here 1 lakh. ठीक है, तो यहाँ पे कैश आपको एज इट इज रिकॉर्ड करना है. ठीक है, कैश आपको एज इट इज रिकॉर्ड करना है इन द बैलेंस शीट. एडमिशन में हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू ऐड द कैपिटल विच इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, वी यूज्ड टू ऐड द गुडविल विच इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर. ठीक है, तो वो और गुडविल जो राइट ऑफ हो जाता था, इन दैट केस आल्सो वी माइनस द अमाउंट फ्रॉम द कैश, राइट. तो यहाँ पे इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, you will directly going to mention the cash amount which is there on the balance sheet. आप उसमें कोई changes नहीं करोगे, as it is you will going to record it in the balance sheet. Is it clear? So we have done with the balance sheet ka asset side. Now we will see the liability side. So capital account is given of Rajesh, Rakesh and Mahesh. So this is the opening balance that you will going to record it in the partners capital account. तो जैसे हम normally करते थे in admission, in the same manner you will going to record it in the. ठीक है, so this is the opening balances. So Rakesh का it's 5 lakh, sorry Rajesh का it's 5 lakh, Rakesh का it's 2 lakh and Mahesh का also it's 2 lakh. ठीक है, so whatever capital is given on the liability side of the balance sheet, old balance sheet, it is the opening balance and it will be recorded on the credit side of partners capital account. Next is sundry creditors, bills payable and bank loan. So these three are the liabilities. Okay, so इन तीनों पे कोई adjustment दिया है.
नहीं दिया है, ठीक है, ना ही क्रेडिटर्स पे है, ना ही बैंक लोन पे है, ना ही बिल्स पेएबल पे है, तो you can directly record the amount in the second column of the balance sheet, ठीक है. So if you will see all the three items are there and all the amounts are recorded in the second column of the amount, ठीक है. तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, so directly you will going to record it in the second column of the amount. Okay, so here we have done with the balance sheet. I hope this point is clear to everyone. This balance sheet is clear, simple calculation है. Okay, so here is the adjustments. So Mr. Rajesh died on 30th June 2019 and the following adjustments were agreed as. अब सबसे पहला important क्या है कि कौन सा पार्टनर बना? मिस्टर राजेश. अब मिस्टर राजेश कौन सा पार्टनर है मेरा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? वो मेरा फर्स्ट पार्टनर था एज पर दिस प्रॉब्लम, ठीक है. तो कौन मरा? मिस्टर राजेश, ठीक है. कब मरा? वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो डेट है कब मरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है. तो कब मरा वो? 30 जून 2019, ठीक है. 30 जून 2019 को मरा है एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर एग्रीड एज. उसके मरने के बाद ये सारे एडजस्टमेंट्स किए हैं. सबसे पहला क्या है? फर्नीचर वाज टू बी एडजस्टेड विद मार्केट वैल्यू of 3,40,000. So in the balance sheet, if you will see, it's 3 lakh, ठीक है. और अब revalued amount कितना हो गया है? 3,40,000. So whether there is an increase or decrease in the assets? Correct. So it's an increase in the value of assets. ठीक है. तो कितना था? 3 lakh था, ठीक है. अब कितना हो गया है? 3,40,000, which means 40,000 is increased. ठीक है. तो ये जो भी 40,000 होगा, it will be the amount of appreciation that you will going to add it in the furniture. ठीक है. तो जैसे हम एडमिशन में करते थे, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी करना है. जो भी अमाउंट ऑफ डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है and there is an increase in asset, so you will going to add it, and if there is decrease in asset, then you will going to deduct. अब यहाँ पे increase हो रहा है, 3 lakhs था बैलेंस शीट में, 3,40,000 हुआ, means 40,000 increase हुआ है, that's why you will going to add it to the furniture. Okay. Second effect कहाँ पे जाएगा? Profit and loss adjustment account में जाएगा. So if there is an increase in asset, we record it on the credit side of the profit and loss adjustment account. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड इट. ओके. नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो लैंड एंड बिल्डिंग 10% डेप्रिशिएट बोला है. सिंपल चीज है, हमें पता है डेप्रिसिएशन मींस देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% बोला है, तो 4 लाख का 10% इज हाउ मच? इट इज 40,000. ठीक है. तो 4 लाख माइनस 40,000, द अमाउंट रिमेन इज 3,60,000. अब यहाँ पे एसेट क्या हुआ है मेरा? डिक्रीज हो रहा है. So there is a decrease in asset. तो सेकेंड इफेक्ट वापस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ही जाएगा, और कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में. So whenever there is a decrease in asset, it is recorded on the debit side of profit and loss adjustment account. Now the next is provide RDD 5% on data. So debtors पे RDD बोला है 5% you have to provide. So where is my data? It's over here. So if you will see 3 lakh और कितना परसेंट RDD बोला है? 5%. 3 lakh का 5% is how much? It is 15,000. ठीक है. तो 3 लाख का 5% इज 15,000. तो 15,000 जो भी है वो माइनस करोगे और जो भी अमाउंट बचेगा यू विल गोइंग टू मेंशन इट इन द सेकंड कॉलम ऑफ द अमाउंट. ओके. नाउ ये आरडीडी जो भी है, बिकॉज ऑफ दैट द अमाउंट ऑफ डेटर इज डिक्रीज, व्हिच मींस हमारा एसेट का वैल्यू कम हो गया है. बिकॉज ऑफ दिस आरडीडी, दैट्स व्हाई इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. कितना? 15,000. ठीक है. So these were the same entries of revaluation of asset which we have saw in admission. उसी तरह आपको ये करना है. ठीक है. अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए न्यू है वो क्या है? फोर्थ पॉइंट, दैट इज द प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ मिस्टर राजेश is to be calculated on the basis of last year's profit which was 1,80,000. ठीक है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. किसका करना है? मिस्टर राजेश का करना है. ठीक है. और कहाँ से करना है? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट. और लास्ट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,80,000. ठीक है. तो उसको ध्यान में रखे. यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. इज इट क्या? ओके. सो व्हाट विल बी योर कैलकुलेशन फॉर दिस? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? यू विल गोइंग टू शो इट इन द वर्किंग नोट. तो वर्किंग नोट में यू विल गोइंग टू कीप द हेडिंग calculation of share of profit which is due to Rajesh.
Give the heading calculation of share of profit due to Rajesh. Okay, so what is the formula? It will be share of profit equals to last year profit. Share of profit equals to last year profit multiply share of profit multiply by share of profit into period. Multiply and share of profit into period. Okay, so this is a formula. Whenever there is a calculation of profit, okay, तो क्या profit है, क्या formula है? Share of profit equals to जो भी प्रॉफिट है लास्ट ईयर का मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस पार्टनर इनटू पीरियड. ओके, सो दिस इज द वे यू विल गोइंग टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. Okay, so here we will going to calculate now. So if you will see, is everyone has written this formula what I have said? ठीक है, तो यहाँ पे we'll going to write so profit, sorry, so share of profit of business partner it will be equals to, ठीक है, जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट है. अब यहाँ पे लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है? इट इज गिवन 1,80,000. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप शेयर, जो भी शेयर है डिजीज पार्टनर का. अब यहाँ पे डिजीज पार्टनर का शेयर क्या होगा? बिकॉज दे आर गेटिंग द शेयर इक्वली, इट विल बी 1/3. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पीरियड. ओके, सो मल्टीप्लाई बाय पीरियड. अब पीरियड क्या है? कब तक वो पार्टनर जिंदा रहा. ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा. तो व्हाट विल बी द हाउ मेनी मंथ्स? ठीक है, व्हाट विल बी द मंथ्स? इफ यू विल गोइंग टू कैलकुलेट इट फ्रॉम अप्रैल. ठीक है, अप्रैल से लेके कब वो मरा? जून को मरा. ठीक है, तो कितने मंथ्स का कैलकुलेशन होगा? अप्रैल, मई, जून. ठीक है, अप्रैल, मई, जून, यानी कैलकुलेशन कितने मंथ्स का होगा? 3 मंथ्स का होगा. तो इट विल बी 3/12. ठीक है, तो जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे जो भी डिजीज पार्टनर का शेयर है और मल्टीप्लाई करोगे जो भी टाइम पीरियड के लिए वो जिंदा था. ठीक है, तो दिस इज द वे यू विल गोइंग टू कैलकुलेट. सो व्हाट विल बी द अमाउंट नाउ? 1,80,000. ठीक है, यहाँ पे ये 3 कट, यहाँ पे ये 3 कट. ठीक है, नाउ 3 4s are 12, 3 6s are 18, right? So this will be 60,000. Okay, so again it will be 4 1s are 4, so 4 1s are 4, 4 5s are 20, it's 15,000. ठीक है, तो कितना प्रॉफिट है डिजीज पार्टनर का? इट इज 15,000. Okay, so this is the way you will going to find out the share of profit of the disease partner. ठीक है, तो कितना आया? 15,000. So if there is a share of profit, ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? मैंने ऑलरेडी बताई थी आपको. आपको क्या करना है? You have to put it to the profit and loss suspense account. ठीक है, और आप उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो if you will see over here, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में we had mentioned बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. और सिर्फ किसके कॉलम में अमाउंट जाएगा? द कॉलम ऑफ डिजीज पार्टनर. तो डिजीज पार्टनर कौन था? हमारा राजेश. और हमने कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट. इट इज 15,000. इज इट क्लियर? फर्स्ट इफेक्ट समझ में आया? कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इन द कॉलम ऑफ डिजीज पार्टनर.
Okay. Now the second effect it will be shown in the balance sheet. Second effect आप कहाँ दिखाओगे? Balance sheet में दिखाओगे. So if you will see over here, profit and loss assessments account 15,000. क्या कहाँ पे दिखाओगे? Balance sheet के asset side में profit and loss suspense account 15,000. Is it clear? Okay. So this is the way you will going to solve the problem. So we have done with all the points. ठीक है, simple है, easy है, ज़्यादा hard नहीं है समझने के लिए. Death of a partner, it's very easy chapter. ठीक है, और ये आपको chapter करना ही है. You cannot skip this chapter. ठीक है, एकदम simple है. Now we have done. तो एक एक करके हम close करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम profit and loss adjustment account close करेंगे. So if you will see यहाँ पे है 40,000 plus 15,000 और यहाँ पे सिर्फ 40,000 था, right? Which means this side is more. तो जो भी अमाउंट है वो सेम अमाउंट मैं क्रेडिट के टोटल में भी डालूंगी. 55,000 में से जब मैं 40,000 डिडक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिला? आई हैव गॉट लॉस. मुझे क्या मिला? जो भी अमाउंट मिला इट इज माय लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड आई विल गोइंग टू ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब एडमिशन में हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को देते थे, लेकिन यहाँ पे आप सभी पार्टनर्स में डिवाइड करोगे जो भी प्रॉफिट या लॉस बचता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में. अब यहाँ पे इनका रेशियो इक्वल बोला था विच इज 1:1:1, राइट? तो 15,000 को डिवाइड किया इक्वली, तो तीन पार्टनर से इसलिए 15,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यू विल गेट 5,000 5,000 एंड 5,000. ठीक है, now once you will going to divide the amount of profit or loss of revaluation of profit and loss adjustment account, then you will going to transfer it to partners capital account. वहाँ पे क्रेडिट साइड में था, तो जब यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा तो वहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में और जो भी अमाउंट है वो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा. ठीक है, नाउ यू विल गोइंग टू क्लोज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले महेश का क्लोज करेंगे. तो यू विल सी दिस साइड इज मोर, क्योंकि यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 2 लाख है, तो ये जो अमाउंट है वही मैं टोटल में डालूंगी और सेम मैं डेबिट में डालूंगी. तो फ्रॉम दिस 2 लाख आई विल गोइंग टू डिडक्ट दिस 5,000. तो कितना अमाउंट बचा? 1,95,000. ठीक है, सिमिलरली आई विल गोइंग टू क्लोज राकेश का अकाउंट. ठीक है, राकेश का इट्स अगेन 2 लाख एंड 5,000. तो यहाँ पे टोटल विल बी 3 लाख. सेम मैं डेबिट में डालूंगी, सो यू विल गोइंग टू माइनस 5,000. तो जो भी अमाउंट बचा है वो कितना है? 1,95,000, राइट? अब ये जो राजेश है वो डिजीज पार्टनर है. ठीक है, तो डिजीज पार्टनर का जो अमाउंट होगा वो अलग अकाउंट में जाएगा और ये जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है इनका जो अमाउंट दिखाओगे इट विल बी योर बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है, तो जो राकेश और जो महेश है ये सर्वाइविंग पार्टनर है, तो इनका जो भी बैलेंस बचेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको आप क्या दिखाओगे? बैलेंस कैरिड डाउन. जबकि जो राजेश है जो डिजीज पार्टनर है उसका भी अगर मैंने अकाउंट क्लोज किया तो वापस यही साइड ज्यादा है. ठीक है, इट इज दी 5 लाख प्लस 15,000. तो टोटल कितना हो गया? 5,15,000. सेम मैंने यहाँ पे डाला, उसमें से मैंने 5,000 माइनस किया, तो जो भी अमाउंट बचेगा वो कहाँ पे जाएगा? राजेश के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में. किसके पास जाएगा? राजेश के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स मेंशन टू राजेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. इज इट क्लियर? ठीक है, राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. ठीक है, नाउ वंस यू विल गोइंग टू क्लोज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब आपको दो चीज ट्रांसफर करनी है. पहला तो ये ट्रांसफर करना है, ठीक है, जो भी राजेश का एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जाएगा वो ट्रांसफर करना है और दूसरा आपको ये ट्रांसफर करना है. ठीक है, ये दो चीजें आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करनी है. तो लेट्स सी. ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल जो भी सर्वाइविंग पार्टनर है उनका आप डालोगे एज इट इज इन द सेम मैनर जैसे हम एडमिशन में करते थे. ठीक है, इट इज अ कैपिटल. ठीक है, और जो राजेश का एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट था वो भी आप लायबिलिटी साइड में ही दिखाओगे, पर आप सेपरेटली दिखाओगे. ठीक है, क्योंकि ये कौन सा पार्टनर था? हमारा डिजीज पार्टनर था और उसका जो भी अमाउंट था वो हमने किसमें ट्रांसफर किया? उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया एज अ लोन, क्योंकि अभी तक ये पे करना बाकी है टू द राजेश एग्जीक्यूटर, इसलिए इसको हम लोन के तौर पे दिखाएंगे एंड इट विल बी रिकॉर्डेड अगेन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ओके, सो दिस इज द वे यू विल गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेट. बहुत सिंपल है, इजी है. ठीक है, 10 मार्क्स आपके हाथ में है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम if there is a case of death of a partner. Any doubt is there? Okay, so in the next
lecture we will going to solve one more problem. Okay,